So any function is used to check at least one element of the sequence fulfill a given condition. So it will check that only one element will true. All means it will check that all the condition are true. माने जदि सब जाक वैल्यू आम ट्रू रही ट्रू रिटर्न कर एनी माने जदि आम कौन सी गोटे कंडीशन ट्रू रोचे मत ट्रू रिटर्न कर तो एनी फंक्शन इज यूज टू चेक इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस फुलफिल गिवन कंडीशन दैट रिटर्न ट्रू लाइक 0 0 0.01 देन 0 तो आ भितर कौन रोचे आमर देख सबू जाक ये फल्स रहा केवल ये आमर गोटे वैल्यू ट्रू अच्छे तेना मत ट्रू रिटर्न कला सपोज if I pass z is equals to 0 0.0 0.01 then print any z. If I print any z when I run the file, sorry it is a capital Z I have mentioned, it is true. यार अर्थ हो जेकोसी आमर गोटे एलिमेंट जदि ट्रू है तो से आमको ट्रू रिटर्न कर जदि सबू जाक मोर फल्स है फल्स रिटर्न कर एनी वन कंडीशन इफ इट इज ट्रू देन इट रिटर्न यू ट्रू सो दैट इज द वर्क ऑफ एनी so note it down what is the work of any it is used to check at least one element of a sequence fulfills a given condition. One element in the sequence fulfill a condition. तो एठी जो एग्जांपल टा रहिला यदि मैं लिखिबी z is equals to all are 0 0 0 0 then 0 then after that I write here print any z that is showing you false 0 0 0 print any z it is showing you false here. Then next we have to go for binary octal hexadecimal function. So bin it is a function which is showing you the binary digit. oct it is converted number to a octal. hex it is converted to element to hexadecimal. bin it converted to the binary. oct it is converted to the octal. hex it is converted to the hexadecimal. Now I convert this all the thing print binary 23. So it is a binary number. Similar way, if I pass here
print octal 234. Just a minute. Then again I print here hexadecimal. Tarjin, the print hexadecimal 5 6 7 8. सर एटू बाइनरी रे 0b फर्स्ट रे कोन पे आछि এটা বাই ডিফল্ট এটা কনভার্ট হচ্ছে আমি যেমতি অক্টালে কনভার্ট করু ম্যানুয়ালি যেমতি কি ম্যাথমেটিক্যাল যেটা আমি জানিছি 8 রে ডিভাইড করু কিংবা 16 রে করু এটা সেমতি আসেনি এটা ডিপেন্ডিং অপন দ্য কম্পিউটার and depending upon the programming এটা চেঞ্জেস हुए ভ্যালু গুলো বুঝি হচ্ছে ଆମେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇନାରୀ ବାହାର କରୁ 2 ରେ ଡିଭିଜିବଲ୍ କରୁ ତାର ଯେଉଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଶୋ କରୁ ସେମିତି 8 ରେ କଲେ ସେମିତି ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସେ ବୁଝି ହଉଛି यस सर Boolean programming the boolean return false if the value is omitted or false, true if the value is true. Okay, the boolean it return false if the value is omitted to false, true if the value is true. The boolean रे कौन होगा? It is a function which return false if value is omitted or false, true if the value is true. The following value are considered false in Python. One is non, false, 0 of any numeric type,
For example, 0, 0.000 empty sequency, empty mapping. Okay, empty sequency and empty mapping. Okay, so that is we're using what built-in function. माने जोटा कि हमारा जोठी जीरो थी वो जीरो ऑफ एनी न्यूमेरिक टाइप empty sequency ए जगह हमारा false आसीबो. Boolean it return the true and false value. It return false when the value is omitted. मतलब कौन अच्छी जदि कौन सी लिस्ट हो कि डिक्शनरी हो जहाँ आम किसी वैल्यू पास न करवा तो से जगह आमको फॉल्स एटा शो कर लिख बुलियन फंक्शन return false if the value is omitted or false and true if the value is true. Okay, so now I show the program. If I pass here it is false, so empty iteratable is false. Then just showing you it is showing you true. नेट हमर एलिमेंट अच्छी से ट्रू शो कला केवल एमटी आइटरेटेबल एटा फॉल्स देखेबो. नेक्स्ट होची टेस्ट सॉरी so it is false. ये जीरो ऑफ एनी सीक्वेंसी एटा हम यूज करले हमें यदि नॉन यूज करिवा नॉन एटी नंबर ने टेस्ट sorry it will take it is false. Then next is
test equals to true, print okay. The boolean test true is true. Then next I pass here. So it is also true. When you pass any sequence, then it is also true. बुझेला? हर्षा, अमित, सोमेश, प्रियदर्शनी. Yes, sir. Yes. Then next is we have to use a ASCII character. The CHR, it return a string of character whose ASCII code is an integer. It return you the ASCII value. The CHR method takes a single parameter as an integer and it is showing you the valid integer from 0 through 1, 114 and 111. Okay, now check here. Right? The CHR string the CHR function, it return the ASCII code of particular integer value. Again, good time.